Hello everyone, I hope you guys are doing great. This is Bhupesh Sharma. You're welcome to my Professor Note. Here in this video, what we are doing is we are doing the detailed analysis of the morning shift literary theory questions which were asked in the August 2004. Evening shift questions of literary theory I have already analyzed in detailed manner that you will find in the video section, and I will also give a link below in the description box here. Alright, so let's start with the very first question you guys can rock in your upcoming exam. Diegesis is a term used by Plato to mean statement. No, he mean it to narration, to narrate, to tell a story. That's what it means. Narration was the meaning of diegesis, the term which he has used. Diegesis is a Greek word. So this is the wrong statement here. Foucault's term politics through the flesh, through the body. Government make the health related policies. They control our birth rate. They have control over the reproduction. In the COVID-19, the best example where everyone ha- was about to be vaccinated. That's the example of the biopower, right? So biopolitics is related to the control over your body. This is the politics which is being done on the health related issues. The government exerts the control on our bodies, right? Refers to the attempt of the government to rationalize the problems. No, biopolitics is related to the rule through the flesh. The history of medicine, therefore, is also the history of medicalization of state power and the emergence of political economy of, ठीक है, तो ये आपकी बायोपॉलिटिक्स एज द नेम सजेस्ट इससे रिलेटेड है. Hypertext is a term that refers to second degree literature made up of work. Second degree का आपका hypertext आपका हो गया जेम्स जॉयस की यूलिसिस, ठीक है. एंड हाइपोटेक्स्ट आपका हो गया होमर की ओडिसी, दैट व्हिच इज द सोर्स टेक्स्ट फॉर द यूलिसिस. दिस इज फ्रॉम दैट एक्चुअली टेकन फ्रॉम आइडिया. सो हाइपोटेक्स्ट आपका है जो प्रीवियस ओरिजिनल वर्जन है, जो हाइपरटेक्स्ट है जो आपका सेकंड डिग्री लिटरेचर है जो कि इंस्पायर्ड है प्रीवियस से. So this is correct here. Desiring machines is a concept introduced by Antonio Gramsci. No, it is introduced by the Giles Deleuze and the Felix Guattari. These are the two theorists who has founded this concept. Dream work, through which our dreams, the process which goes in creating the dreams, is a psychoanalytical term to describe the mechanism that transforms raw material of our dream to its manifest content. And the raw material को क्या कहते हैं? Latent content. This term is given by the Freud. ठीक है. All right, so B, C, E is the correct one here. C and E particularly, since we don't have any other option, because since D is incorrect, then how to choose one? Even though here we have C and E, that creates a bit of a confusion. But C and E are correct. Okay. All right. Biopolitics. Here I had given the detailed answers for you, so you can just stop the video and just can go and read them. All right. Then we have the second question here. Who among the following published a series of essays titled The New Criticism? All of these theories are from the new, they are all new critiques. William K. Seth Wimser Jr. and the Monroe C. Beardsley, both of them have written a work called The Verbal Icon, and here they have propounded two terms. I want you guys to write those terms below in the comment section below, right? New Criticism was an essay written by the John Crow Ransom in the 1951. So make sure you guys go through all the literary critiques, their important works, their major works. Dates of publication are very, very important. Now, the third question here. Raymond Williams preface to film. Herbert Marcuse, One Dimensional Man. Frederick Jameson, Postmodernism. He has critiqued the modernism and the postmodernism
through the perspective of the Marxism here. Richard Hogarth, the father figure of the new cultural study, the uses of literacy, where he talk about the impact of mass media and the advertisement on the United States people, that how it is affecting their choices, right? The decisions that they are making, it is influenced by the mass media now. So these are the right connections I have made here. आंसर तो अब आप लिख ही सकते हो कमेंट सेक्शन में इसको रिलेट करके, है ना? इतनी सी जहमत. 1991. These are the dates of publication I have mentioned over here. This is the Frederick Jameson's work. Author offers a critique of modernism and postmodernism from a Marxist perspective. मैंने ये डिटेल में यहाँ पे आपके लिए वर्क्स मेंशन करके रखे हैं, और मैंने आपको इसका एक आइडिया दे दिया है दैट व्हाट दीज वर्क्स आर, है ना? सिंस यू गाइस वांट me to make these videos in a short period of time, so then I will not dig deeper into it. Okay. 1957 is the date of publication of the Uses of Literacy by the Richard Hogarth. Now comes here where we have to arrange these works in the chronological order. Michel Foucault's The Archaeology of Knowledge. Archaeology of Knowledge. The work was published somewhere around in the 1969. Mythology in the 1957. That is the night of grammatology. This is where he coined the term of the deconstruction. 1967. Acritus 1966. It was the collection of the lectures which he has delivered. Jane Francois Lyotard, the postmodern condition. This is something we had already discussed in the previous video. Evening shift में भी ये question पूछा गया था. So 1979. B, then D. B, then D. This is the right one here. Right? This is how. So now what we get to learn from here? We get to learn from here that all these writers, when you will go back to your books and start studying and reading, make sure you cover them. All their major works, their important terms, and the publication dates of their major works. This is very, very important. Right? Because इन चीज़ों को in depth में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, नेट के पर्सपेक्टिव से तो चलो आप सुपरफिशियल लेवल पे इंगेज हो भी जाओ इन टॉपिक्स के साथ, बट जब पीएचडी की बात आती है, एज राइट नाउ वी आर डूइंग, सो वी हैव टू नो दीज कॉन्सेप्ट इन अ मच मोर डीपर लेवल. You must be able to articulate them well. You must be able to write them in a very refined language, right? So yeah, your live recorded classes are available, guys. Study material आपको अपने पेस पे पढ़ना है. Study material, you want to be very clear. आपको JRF करना है, आपको पूरा एक रोड मैप चाहिए. रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस विल हेल्प यू इन एवरी वे. मतलब आपको हर एक चीज, हर एक एंगल, हर एक एस्पेक्ट पता चल जाएगा इन क्लासेस में. बाकी स्टडी मटेरियल होता है, बहुत से लोग प्रेपरेशन कर चुके होते हैं. दे वांट दैट कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट. So this is the content you guys have here. Mock test series to evaluate and assess your preparation. Simply just contact on this given number, right, to crack this examination. So as you know myself, I'm a JRI pursuing my PG, so I know the kind of hard work that it takes. So we have just given you all of that content which is needed to be studied. राइट. सो मैंने थोड़ी डिटेल में इन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करके रखा था ये, बट थ्रू आउट द कॉन्टिनेंटल फिलोसफीज में एक एक टॉपिक को आपको उठाना पड़ेगा. सो इतना तो जाने की जरूरत नहीं है कि आपकी कॉन्टिनेंटल फिलोसफीज को आपको बताना है. इट जस्ट कि इसमें इसमें द स्पीच वाज गिवन द मच मोर इम्पोर्टेंस देन द राइटिंग, राइट. ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर. ठीक है, जैसे कि आपका फोनोसेंट्रिसिज्म, ठीक है, जहाँ पे आपकी स्पीच को इम्पोर्टेंस दी जाती है. ठीक है, फिर आपका लोगो सेंट्रिसिज्म है, आपका फेलो सेंट्रिसिज्म है. ये सारे टर्म्स आपके इस वर्क से आते हैं बाय Derrida. ठीक है. Then which among the following is not a state of human mental disposition as posited by D. Jacques Lacan?
ये इनको मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं इनको अलग अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूंगा ना तो वो अच्छे से होगा, और यहाँ पे करूंगा तो ये वीडियो 1-1.5 घंटे की हो जाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, है ना? Which among the following is not a state of human mental disposition posited by the जैक्स लकान? देखो जैक्स लकान ने 3 ऑर्डर दिए हैं ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ईगो। सबसे पहले है इमेजिनरी ऑर्डर। इट मींस इमेज, इसका मतलब है कि हम अपनी इमेज को देखते हैं इन द मिरर एंड वी फाइंड दिस इज द होल मी, यही हूं मैं, दिस इज द एग्जैक्टली हु आई एम, बट दैट इज द डिsillusion, दिस इज द illusional uh, comprehension of our identity, this is who we are, no, वो वो illusionary प्रेजेंटेशन है आपकी, है ना? सिंबॉलिक है, दिस इज द ऑर्डर व्हेन यू गेन एंड एक्वायर द लैंग्वेज, आप सोशल ऑर्डर को सीखते हैं। ये आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड था, ये आपका क्या है, ये दुनिया है जिसमें आप रह रहे हैं, एंड द रियल दैट स्प्लिट्स दीज बोथ, ये बताता है कि असली क्या है। सिंबॉलिक ऑर्डर ट्राई गिव यू द वेज टू फुलफिल योर डिजायर, ठीक है, बट वो आपको क्या करता रहता है, इट कीप टेलिंग यू विच यू आर नॉट, बिकॉज द लैंग्वेज कैन नेवर, इट्स ओनली वर्ड्स, इट डजंट हैव मीनिंग, राइट? एंड द मीनिंग इज समथिंग विच इज अलाइंड विद द डिजायर। उसकी फुलफिलमेंट कब होगी? जब वो उस चीज को पाएगा। क्या वर्ड कभी अपने मीनिंग को पा पाता है? एवर इट गेट क्लोजर टू द मीनिंग? नहीं ना, मीनिंग्स आर रिलेटिव। तो ये 3 जो ऑर्डर है वो लकान ने दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आती है कल्चरल इंडस्ट्री, इज द टर्म बाय द अडोर्नो हॉर्किमर। अगेन वही एंगल है कि आपका जो मास मीडिया है, एडवर्टीजमेंट है, दे आर द वन हु आर बिल्डिंग द कल्चर। तो वो एक तरह से इंडस्ट्री बन गई है कि क्या कल्चर लेके आना है। एन एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, जो प्रीवियस राइटर्स होते हैं दे exert the influence over the new breed of writer, and now these new breed of writer want to do something different, they want to do something new, but how? दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंसेस्टर। शेक्सपियर पढ़ रखा है, शेक्सपियर का नरेशन जिस तरह से है, प्लॉट मेकिंग जिस तरह से है, जिस तरह की स्टोरी बोलता है, वो उससे इन्फ्लुएंस्ड है। आप एक एनवायरनमेंट में रहे हो और एक एनवायरनमेंट ने आपको फ्रेम किया है, आपको बनाया है। अब आप उन दीवार को, उस वॉल को आप तोड़ना चाहते हो, हाउ दैट इज पॉसिबल? देन व्हाट दे डू, वेरी डेलिबरेटली दे स्विच द सिंटैक्स, या वर्ड चेंज कर देंगे, लैंग्वेज को थोड़ा स्विच कर देंगे, ट्विस्ट कर देंगे, ताकि एक अलग तरह की स्टोरी लिखी जा सके। सो एक एंग्जाइटी रहती है राइटर्स में, ठीक है। हेरोल्ड ब्लूम ने ये लिख के रखा है, दिया है आपका कॉन्सेप्ट। कल्चर मटेरियलिज्म, अगेन वी हैव स्टडीड दिस प्रीवियसली एज वेल, इफ यू आर कनेक्टेड विद मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। रेमंड विलियम्स, डायलॉजिज्म, मिखेल बाख्तिन के डायलॉग के थ्रू ही एक मीनिंग क्रिएट होता है। मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ बोलोगे, देयर इज अ डायलॉग बिटवीन द बुक, बिटवीन द रीडर एंड बिटवीन द ऑथर, एंड थ्रू दिस कन्वर्जेशन वी रीच टू द फाइनल मीनिंग, ठीक है। डायलॉग का होना जरूरी है क्योंकि एक ही अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। ही वाज अगेंस्ट दिस रूल ऑफ अथॉरिटी के, कोई टायरनिज्म जो होता है, टायरेनिटी जो होती है, ठीक है। ही वांट द पर्सन who sits with the people and come to the conclusion rather than making the decisions themselves entirely, कि हर एक आदमी की बात को सुना जाना चाहिए। तो हमने कनेक्शन क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका सही ऑप्शन क्या है, इतनी सी अगर आप जहमत कर दें तो लिखें आप कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको भी ये चीजें नेक्स्ट एग्जाम के लिए याद रहें। आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ओनली दैट्स द रीजन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर आप एफर्ट डालेंगे सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। All right, now we're going to arrange these authors in the chronological order according to their dates. Now, Simon de Beauvoir from 1908 to 1906. Mr. Walter Benjamin, 1890 to 1990. Jane Baudelaire, 1929. He's the man who is known for the postmodernism. Simulacra, 1890। मुझसे मेरे पीएचडी के एग्जाम का इंटरव्यू जो था वहां पे पूछा गया था कि जेन बॉडलेयर, the first question came, yeah, he's a postmodern theorist। लेकिन नहीं भूपेश, you were well prepared। that was a good compliment। so ये आपके हैं, अब आप अरेंज तो कर ही सकते हैं, अरेंज कर दो, एबीसी ही लिख दो।
कमेंट सेक्शन में। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग, हाँ एक और चीज, ये राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थियरिस्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमन द बीवर का इंपॉर्टेंट वर्क, सेकंड सेक्स, वॉल्टर बेंजामिन, जेन बॉडलियर्ड, मिखेल बाख्तिन, रोलन बार्थेस, इनके ऑलमोस्ट हर एक वर्क इंपॉर्टेंट है। जो भी मेजर मेजर वर्क्स हैं हमने डिस्कस भी करे हैं, आपको स्टडी मटेरियल में भी वही मैंने अच्छे से सबको एलेबोरेट करके रखा है। तो वो आपके लिए एक हो जाता है कि मटेरियल जो है ना आपको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक जगह मिल जाता है ना। यू हैव इट एट अ वन प्लेस, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको खाली प्रेपरेशन करनी होती है। ठीक है। और आई मेड इट श्योर दैट, आई थिंक जब से हमने इंट्रोड्यूस किया स्टडी मटेरियल, आई हैवंट चेंज द प्राइस, सेम वही प्राइस आज भी स्टडी मटेरियल का है, 4950। अगर आप कोई मुझसे कनेक्टेड होंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वही है। अभी हमने नई एक बुकलेट इशू की, आपकी क्रोनोलॉजी की, 19799 है उसका प्राइस, राइट। तो प्राइसेस सेम है, कभी चेंज नहीं होते हैं। मुझे पता है कि एक स्टूडेंट कितना ही अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, करने को मैं इसे 14 कर दूं, 10 कर दूं, दैट्स अनदर थिंग। ओके, नाउ लेट्स कम टू इट। Who among the following is the author of the implied reader and the act of reading? Implied reader होता है जिसके लिए हम क्या है, वर्क जो हमारे माइंड में एक रीडर बना हुआ होता है ना, टू whom we are writing this novel। जैसे कि शार्लेट ब्रॉन्टे ने जेन एयर लिखी थी, किसके लिए? द वुमेन्स ऑफ दैट विक्टोरियन एरा। ठीक है, because those are the person who knows the social norms, how the society is, they are the one who will understand it, right? एक्चुअल रीडर एक होता है इसके ऑपोजिट, हु एक्चुअली रीड्स। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ सोशल नॉर्म्स के बारे में नहीं पता, हमें नहीं पता सोसाइटी के डायनेमिक्स क्या हैं जिस सोसाइटी में वो सेट है नॉवल। ठीक है, तो इम्प्लाइड रीडर जो आपका ये है, इसके ऑथर हैं वॉल्फगैंग आइजर। स्टेनले फिश को, हंस रॉबर्ट जॉस को, रोलन विवार्सिस को पढ़ना है। ऐसे प्रेशर नहीं लेना है कि सर ओ माय गॉड यू हैव गिवन अस सो मच टास्क, हाउ विल आई डू इन अ सिंगल डे। सिंगल डे में नहीं बेटा, इसको अलग अलग करके आपने पढ़ना है। कभी रोलन बार्थ एक दिन के लिए रखो, नेक्स्ट दिन की स्टैनले फिश पढ़ लो। ये तो आप तीनों राइटर्स एक ही दिन में कर लोगे। रोलन बार्थ इज अ थोड़े से, he has multiple concepts in the works, so he has a lot in his what do we call that, paraphernalia of works he has written, right? तो ये चीज है। Now we have this question here. Which of the following statements are correct? The term performativity was coined by Derrida. Performativity तो इसने नहीं करी यार कॉइन, ये तो आपका जूडिथ बटलर का है। Who says that the जो gender है that is performed, right? We are not born as a men and women. The society has turned us into it. We are performing the gender. If I'm wearing high heels, if I'm wearing the nail polish, right? That's what makes you woman. The idea of meme was originally coined by the Richard Dawkins. Yes, this is correct. The culture industry by Adorno Horkheimer. Yes, this is correct. Ideological state apparatus was coined by Bakhtin. This is coined by the Louis Althusser. Womanism was a coined by Alice Walker. Yes, this is correct. So B, C, and E. B, C, and E. B, C, and E is the right one. ठीक है। मीम टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी 1971 में, इन द बुक ऑफ सेल्फिश जीन बाय रिचर्ड डॉकिंस। वुमनिज्म का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी बुक में आया ये निकल के? इन सर्च ऑफ अवर मदर्स गार्डन्स, एलाइस वॉकर, ये याद रखना है। देन वुमनिस्ट टर्म शी गिव इन अ शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड द कम इन अपार्ट 1979। तो ये दो चीजें आप याद रख के चलो। Which among the following critiques stated that the object of study in literary science is not literature but literariness? कि आप जो literature आप लिख रहे हो
what differentiates literature from the other writings? What differentiate literature from the daily conversation? It is only the language ना. हमारे लिटरेचर की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, एंड हेयर इन लिटरेचर दे आर प्राइमरीली डिस्कसिंग अबाउट पोइट्री. ये कौन है आपके? ये कौन है आपके? ये आपके हैं रशियन फॉर्मलिस्ट. ये आपके रशियन फॉर्मलिस्ट रोमन जैकॉब्सन, right? He termed the literariness term in 1921 in his work Modern Russian Poetry. He stated here the object of literary science is not literature but the literariness. Literature तो आप सोसाइटी के बारे में लिख रहे हो, आप एक शॉप के बारे में लिख रहे हो, आप एक शॉपकीपर के बारे में लिख रहे हो, पर वो लिटरेचर, उसे वो लिटरेचर थोड़ी ना बनाता है, उसके बारे में तो कोई भी लिखे जा रहा है. What changes it, what differentiates it is the language of it. वो एक रेटोरिसिटी, मेटाफर्स या यूज करना. ठीक है. I say Ram is a lion. This is a literary touch. This is a literary tone of a work. Ram is a lion. वो क्वालिटी आप ऐड कर देते हो, वो आप मेटाफर यूज कर देते हो, रिटोरिकल हो जाता है. दैट्स व्हाट मेक्स इट द लिटरेचर देसी है. ठीक है. हमें बाहर के वर्ड से कनेक्ट नहीं करना है, हमें इसे कनेक्ट करना है टू इट्स ओन सेल्फ. ये लैंग्वेज पे, डिवाइसेस पे, उस पे ये एम्फेसिस ज्यादा करते थे. ठीक है गाइस, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके आते हैं, और ये आपके जो ऑप्शन में सारे थ्योरीज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं. आई होप यू एंजॉय द वीडियो, यू गॉट टू लर्न समथिंग टुडे. एंड बाकी preparing for the examination and English literature competitive exam, just simply contact us on the given number. These are the courses, study material, and the mock tests are available for you. Thanks for watching. This is Bhupesh Sharma. We'll see you in the another video.